that is poetry. Poetry of book 2 relating to approaches to English. Particularly, we must have to go through the contents, and the poem starts with ecology. Ecology. Your name I have forgotten. Gita. Your name Vidya. Gita Vidya. Your name Ansika. Your name Sashwati. Very nice. Only 4 students are of alternative English. Try to understand the point. One thing I am talking about students. Most of the time, if the students become irregular in alternative English, actually it creates them certain type of complexities. But what happens if you cover up almost all the chapters by attending the classes regularly? We have one set class within a week. So be regular, and actually those who are the actually hostel girls, they have to be punctual. Then and there we must have to proceed. We will have to first. We have completed churches, Prasper schools. Completed. No. We have completed one chapter relating to memories of a Prasper school. Prasper is completed. I have dictated the answer. Answer. Okay, it has been completed. Still, then I invite you to attend at 11:15 on Monday. If you are available, you can join. One chapter has been completed. Another is cures for the common cold. Cures for the common cold. That's page number 77. Cures for the common cold by H.F. Dale or Harold S. Dale. Thereafter, students, we must have to march towards the poetry. That poem is known as ecology. Listen, students, what the poem talks about. Students, the poem you will read presently has the title Ecology. Ecology means the science of environment. It ought to be written. Try to write it down. If you have pencils, you can also write it in your paper. Ecology, science of environment. What does ecology mean? If you are not sure of its meaning, look it up in the glossary, following the text of the poem and write its meaning here. So, if you are not evident relating to its meaning, and it has been perhaps written in the glossary, it has been written separate way. And what I have told, that is real also, students. The way in which plants, animals, and people are related to each other, to their environment. So, ecology is the science of environment or the study of environment. Science or study of environment. Ecology is the science or study of environment. Actually, students, what the topic tells about, according to the poet A.K. Ramanujan, A.K. Ramanujan, A.K. Ramanujan, the day after the first rain, one minute. Listen here, students. Comprehending the text, the day after the first rain, for years, I would come home in a rush. According to A.K. Ramanujan, the day after the first rain, you see, students, during summer season, most of the leaves are falling down, and the maximum trees look leafless. But when rainy season comes, the greeny environment looks flexible, looks entertaining, looks maximally. ଯେତେବେଳେ ସମର ସିଜନ ଅଛି, ଖରା ଦିନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଗଛ ଗୁଡା କଣ ହୁଏ, ବହୁତ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇଥାଏ
किंतु जितेबले वर्षा सीजन पड़ी आसे से पत्थर गुड़ाक सब कौन करते प्रस्फुटित हो जाते. So maximum flowers bloom in case of rainy season. You must be knowing about water lily. को सीजन रेनी सीजन तमें जानथिबो हमर टॉल टगर फूल सेटा मध्ये सही पड़ी अराइज करे जदि हमें कंसीडर करबा चंपक is also there. So the poet is talking about after the first rain what happens to be according to A.K. Ramanujan for years I would come home in a rage in the sense anger rage rag rage anger मु कौन करे प्रथम वर्षा हैला परे घर को फेरे आ टिके रागिकी फेरे शाशु शाशु डू नो ओडिया उड़बी इंग्लिश ओडिया बोथ बोथ हाँ तेणु ओडिया रे कहि देबी इंग्लिश रे कहि देबी बोथ हाँ जो माने जोटा जो डाउट क्वेश्चन अरेंज करिवो ओके तो सो फॉर द डे आफ्टर द फर्स्ट रेन for years I would come home in a rage means in anger. What happens to the poet? It has not been revealed now. कौन प्रकृति रे हेची पोएट पर हमें जानी ना स्टिल देन जेतेबेले प्रथम वर्ष हुए तापर पोएट के घर को रागी गिरी आसी थांती व्हाई आर टोटली समरी दिया जीवो वर्ड मीनिंग दिया जीवो क्वेश्चन आंसर दिया जीवो बिट बाय बिट होछ डाउट ग्रो क्लास भी करिबा एग्जाम पर आउ थरे तीनटा जक भी रिवाइज करबा जति की पढै छै समरी आउ थरे देबी डिस्कशन करेबी क्वेश्चन आंसर देबी वर्ड मीनिंग देबी बट ट्राई टू सिक्योर फुल मार्क्स. For I could see from a miles away our three red champak trees had done it again. Try to understand the point. For I could see from a mile away, mile in the sense some distance, not talking about 1.6 kilometer. तामरे ठीक 1.6 किलोमीटर देखिले हम चंपा गट देखा जाए से कथा नहीं वर्षा दिन देखिबो जेतेबेले खरा दिन थिबो पत्र झड़ा देइदिबो सब गछ गुडाक जेमति थुंटा बर गछ भलिया दिसथिबे थुंटा सब गछ गुडाक लीफलेस जोना पडुथिबे वैकेंट जोना पडुथिबे किंतु जेतेबेले वर्षा हे जिवो गछ गुडाक टोटली कोन करिवे लैडन हे जिवे दे आर फुलफिल्ड विथ ट्रीज फुलफिल्ड विथ ट्रीज सर्टेन मोर एक्चुअली सीड्स आर देयर गोटे गोटे मंजी पड़ो खरा दिन जना पड़ न तुम देख खरा दिन जो गुड़ा सुखिला पड़ो कि वर्षा दिन आपे आपे जर्मिनेट हम ताकू किए जापारती कि जापारती जिते गछटा उठीगला आम जाना ए ग्रीन लिप्स आर देयर सब गुड़ा खाली भरपूर हो कौन कहला ग्रीन लिप्स गुड़ाक तेणु पोएट कहते गोटे चंपक ट्री इन द सेंस चंपा गछ तीन टा चंपा गछ थाए घर पाखापाखि आ बहुत स्वीट सेंटेड चंपक फ्लावर ना ये बहुत बास्ना हुए नहीं बास्ना हुए किंतु पीले गोटे कथा कहबी समस्त को कौन बास्नाटा फ्रेगनेंस भल लगे मोस्ट ऑफ द टाइम यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल आउट लिक्विड सेटा जदी लगे जब घरे लेडीज लोक मानकर टिके मुंड काल बुलेला उठा लगे आउ तुम देखिबो मशा दुब कहल आम घरे मशा कामुड़े एकमात्र गोटे मेडिसिन आम अच्छी झुणा आउ जोटा लगे आम घरे जो लेडीज लोक रही सही पारे ए मुंड कौन हो बंद कर बाती लगे आम बंद कर ये पोएट एक्चुअली से प्रोब्लेम अच्छे माँ देखनी बर्तमान आम फ्लोरिशिंग वे देखले सरस्वती फॉर आई कुड सी फ्रॉम ए माइल्स अवे गोटे माइल दूर मु देखिक जापारि आवर थ्री रेड चंपक ट्रीज चंपा फूल गुड़ाक गोटे गोटे थाए रेड इन कलर गोटे गोटे थाए व्हाइट इन कलर तेणु आमर जो रही रेड चंपक ट्रीज माने लाल लंगर चंपा गछ हाड डन इट अगेन आउ थे कौन है प्रस्फुटित है आउ थे कौन है फुल स्ट्रेंथ को आसीगलानी ओइंग टू सफिशिएंट रेन रेन इज नथिंग बट द लाइफ ऑफ द वाटर रेन इज द लाइफ ऑफ द लाइफ ऑफ द ट्रीज रेन begets rain begets rain so in order to get life we get water versus water we get water transfusion water so water transfusion water in the sense water cycle जो वर्षा सीजन में वर्षाटा आसला खरा दिन आम नहीं गले वर्षा होउची बोली मन रख वर्षा होउची सो रेन बिगेट्स रेन ट्राई टू अंडरस्टैंड तेणु पिले देख आवर थ्री रेड चंपक ट्रीज हाड डन इट अगेन आउ थे कौन है हाड डन इट अगेन इन द सेंस प्रस्फुटित हो गलानी फ्लावरी हो गलानी आउ फ्लावर आसला माने कौन हम तार स्वीट सेंट आस एनचेंटिंग सेंट आसो हाड ब्रस्ट इनटू फ्लावर एंड गिवन मदर
or a fast blinding migraine or migraine, whatever you can pronounce, of the season, had burst into flower. The advent of rain, what I was quoting about, water begets water. The advent of rain had burst into flower. So far as the champaka tree is concerned, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସିଜନ ଆସିଯାଇଛି ଚମ୍ପକ ଗଛରେ କ'ଣ ହେଲାଣି ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଗିଭିନ୍ ମଦର, ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ସିଏ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଷ୍ଟେକିଂ ଦେଇଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପେନ୍ ଦେଇଛି, ହର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡିଂ migraine. Migraine in the sense disgusting. Disgusting ମାନେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ। ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାଆ ବହୁତ କ'ଣ ହେଲାଣି ନା ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ସେ ପୁରା ଡିସହାର୍ଟେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେଣି, ଇରିଟେଟିଂ ହେଇଗଲେଣି। disgusting in the sense irritating of the season। ତାମାନେ ମାଆ କହିବେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡିଂ in the sense କ'ଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡିଂ ହିୟର ସୁପରଷ୍ଟିସିୟସ୍, ଅଧିକାଂଶ କହନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ, ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିବ, no no will not go by bus, why there is actually I feel vomiting or nausea। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ ନା ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ସାଇକୋଲୋଜି ଯେ ଆମେ ବସରେ ବସିଲେ ଆମକୁ ବାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବ, ଏଇ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଇଟ୍ ଇଜ କନସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡିଂ। ଜଣେ ଜଣେ ଆମେ କ'ଣ କରେ ମନରେ ସେମିତି ଭାବି ନେଉଛୁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ପୁଣି ଗଲେ କିଛି ହୁଏନି। so far as the psychology of the poet's mother is concerned, her fast blinding migraine of the season, disgusting of the season, with their straight long heavy hum, yellow pollen fog of a fragrance no wind could shift। Listen, ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟିଛି with their straight long heavy hum, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲ, ଓଳିଲା ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଓଳିକି ରହିଲେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ। ଆଉ ସେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦିହରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ୟେଲୋ ପୋଲନ, ପୋଲନ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଜାଣିଥିବ ପୋଲିନାଇଜେସନ, ଯୋଉଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଥିବେ କହିଲ, ଏ ବ୍ରାଉନିଶ ଡଷ୍ଟ ନଥିବ, ଫୁଲ ଦିହରେ ଡଷ୍ଟ ନଥାଏ, କେଶର କେଶର ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଟାଇପର, ସେ କେଶର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିବ। ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ୟେଲୋ ପୋଲନ ଫଗ ଅଫ ଏ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ, ସେ ଯୋଉ ପାଉଡର ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ଫଗ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ପାଉଡର, ଆରେ ଫୁଲ ଦିହରେ ତମେ ଝାଡ଼ିଦେବ, ତମେ ଦେଖିବ ବିଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଦିହରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ୟେଲୋ କଲର ଲାଗିଯାଏ ନା ବିଚ୍ ଦିହରେ, ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି କ'ଣ କି ପୋଲନ। ପୋଲନ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଫର ପୋଲିନେସନ ଅଫ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ। ୟେଲୋ ପୋଲନ ଫଗ ଅଫ ଏ ଫ୍ରାଗ୍ରାନ୍ସ, ବାସ୍ନା ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ତାର ଯୋଉ ଆସିଯିବ ୟେଲୋ କଲରର ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ, ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସହାର୍ଟେନିଂ ଟୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ସ କନସର୍ନ। नो वाइंड कुड शेप, ପିଲେ ଦେଖ ଯଦି ପବନ ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା କ'ଣ ଟୋଟାଲି ରିମୁଭ୍ ହୁଏ? ତମେ ଭାବିଲେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ ବଟନୀରେ ପୋଲିନେସନ ବାବଦରେ, ଦେଖେଇ ଦେବ ପୋଲିନେସନ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ କିଏ, ବିଚ୍ ହନି ବି କରେ ନା, ଡ୍ରୋନ୍ସ ଆମର ପୋକ ଗୁଡ଼ା ଏମାନେ ସବୁ। So students, butterfly, no door could shut out from our black pillared house whose walls had ears and eyes। Try to understand. Suppose we blocked almost all the doors, गोटे बिल्डिंग रे टोटाली डोर आमे बंद कर देलु, किंतु से साइड रे कोन कलु गोटे केबुल तार बोडिलु, ता भीतर को एंट्री करिवनी होय, एयर पास करिवो ना नहीं, एयर निश्चित रूपे आमे जेते भी डोर शट करिबा सेति पई कहउचंदी ईच रूम हैज इयर्स, इयर्स एंड आईज, प्रत्येक घर रो आखी आउ कान अछि। आखि कान इन दी सेंस कोन, जेते भी तमे बंद बंद कर जहाँ हेले भी सूर्यालोक बा हमर सनलाइट टिके एंट्री करिवो। आउ गोटे मन रख, जे कोन सी डायरेक्शन, नॉर्थ जदि विंड आसिला साउथ को जीवो, वेस्ट रु जदि आसिला ईस्ट की जीवो, जेमिति ले डायरेक्शन को जीवो, तेनु विंड बा एयर ता हमर केबे हेले एब्सेंट रहइबनी। सेपटर घर रे जदि ठाकुर पूजा होतबो हमर स्पेलिंग कोन सी धूपकाठ दिया हेतिबो, एपटर घर को ऑटोमेटिकली आसीबो, केना एरी कंडीशन रा सब बेले पई कोन है ट्रांसफॉर्मेशन व वेंटिलेशन रहिछि। So try to understand the point. No door could shut out from our black pillars house। आम घर टाको आम एमती तैयारी करिचे, आम घर रे सब टिके टिके कौन अच्छी कहला होल्स अछि, छोट छोट कणा बा छिद्र अछि। तमे देखिनिया पिले, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट वेसल। In case of summer season we store water in a vessel,
अरे माठिया पानी रखुना पानी रखिला मैंने से थंडा भी कहीं आमर भेसल भी पोरस तेणु घरे भी लाइट कौन एयर पास करने अच्छी किसी स्पेस रही इट इज नॉट 100% सेल्स देख बिले नो डोर कुड शट आउट फ्रॉम आवर ब्लैक पिलर्ड हाउस व्हिच walls had ears and eyes पिले प्रत्येक वॉल रे एटलीस्ट आमर डोर रोची ना विंडो रोची ना सीना वालिंग एटा को हमें कंप्लीट कर देले जोटी डोर विंडो रोची स्पेस टा कोन पई ओनली फॉर वेंटिलेशन ओनली वी विल फील सफोकेशन try to understand the point scales smells bones cracks nightly visiting voices and we are porous like us try to understand what is the meaning of scales students this is nothing but this is our skin and most of the time you must be knowing about the scales in the sense the upper layer of the skin the snakes resect or leave their scales साप मान काटी छाड़ते ये कहबार उद्देश्य हूँ आम राति कौन कलु घर भितर रेस्ट नहीं गलु किंतु कौन कौन बेले बेले हुए स्केल्स स्मेल्स बोन क्रैक्स नाइटली विजिटिंग वॉइसेस वेयर पोरस लाइक अस आम जब देखा आमर स्नेक्स हूँ कि जेकोसी गोटे गोटे एभली प्रकार रही आमर क्रिएचर जो मान स्केल ऊपर चमड़ा टी बाजिले शब्द हुए स्मेल्स ईच एंड एवरी क्रिएचर हैज इट्स स्मेलिंग गोटे गोटे साप अच्छा से साप गले भी स्मेलिंग हम गोटे गोटे एनिमल्स अच्छा से जब पास करके जाइए स्मेलिंग हम हेलो मामा आसवे अब तो अपेक्षा करता मामा आसवे listen scales smells most of the time we smell something else bone cracks in the sense suppose students we are sleeping at night but certain more people will come there is champak tree we must click it out we must have to pluck it tonight तमें देखो ना जो खुदरुकुणी ओषा होथिबो राति रे पिला सोउ नथि मार्गशीर मास गुरुवार हम जी गेंडू फूल लगे मेरीगोल्ड ट्री से भाई थो मुझे ठाकुर पूजा करी से तार बाहर लगे शोथ सका उठा किसी फूल न से कौन जो चंपक ट्री लगे इन द सेन्स तुम देख घरे गोटे गोटे लेडीज लोकर एमती प्रकार माइंड सेट तुम जब छात उपर दुम दुम कर तले मुंड ये छात उपर किए कूदे जदि छुआ घो घा पार्टी कर खेल रास्तार सी इरिटेटिंग है तेणु घर साइड रे जो चंपा फूल गछटा अच्छी चंपक ट्री अच्छी से कौन करेंगे किए धरा जाऊ गोटे आनिमल लाइक आसीगला किए धरा जाऊ गोटे क्रिएचर आसीगला किए धरा जाऊ चलिकी रहा फूल तोलिया तार जो बोन क्रेकिंग इन द सेंस कौन कहला पादर जो शब्दटा पड़ो सेटा बेले बेले कौन करे ना क्रिक्स विजिटिंग वॉइसेस अब जो मैंने आसो फूल तोलिया से कथबार्ता हे कथबार्ता कले द्वारा आंकर कौन है शोबार डिस्टर्ब है एंड वी आर पोरस लाइक अस से गुड़ा कथा गुड़ा आमको जना पड़ जाए आम जापर वी लिसन टू दिस बट मदर flashing her temper like her mother's tweeted silver grandchildren's sneakers actually students try to understand but mother flashing her temper माँ कौन करती पूरा रागी जाती भयंकर भाव रागी उठती कौन पर रागी उठती तुम जानी छोट पिला माने गोटे गोटे टाइम रे कौन करती ना इलास्टिक यूज करती इलास्टिक वाला कौन कहल ड्रेस से ड्रेसटा दरकार पड़े कौन हम एक्सपांड हो पुणी दरकार पड़े कौन हम ओरिजिनल पॉइंट को आसीज माँ सेमती कौन करती ये गुड़ा शुणिला पूरा सर्ट टेम्पर हो रागिकी पूरा एक्चुअली ओभर टेम्पर्ड हो ता परवर्ती स्टेज रे जमती इलास्टिक प्रॉपर्टी भाया माइंड पुणी कूल हो सी कौन करेंगे आज यूजुअल पुणी नॉर्मल स्टेज को पलि आस तुम देखना आमर गोटे गोटे पर्सन ना था मुडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूड
जड़े जड़े थे बेले बेले भारी भल कथा कहते आउ बेले बेले पूरा सर्ट टेम्पर बेले नथी मुडी नथी जड़े जड़े गोटे गोटे टीचर भी सेमती थे गोटे गोटे दिन भारी मजा कथा करेंगे आउ गोटे दिन पाठ बुझे पिटिबे पूरा भयंकर पिटिबे नथी हाँ सेटा भी बहुत है आम बर्तमान स्टेज आम देखा मैक्सीम लोक मानकर 8% अच्छे 8% पर्टिकुलरली आम टॉकिंग तेणु माँ कौन करते बेतबे इरिटेटिंग हो जाती किए आम गछ मूल कहीं फुल तोड़ापी किए पार्टी करुम गछ मूले किए एमती साउंड करुच्ची का पाद चिन्ह चुभुची गोटे माइंड रे गुड़ाक डिबाकल्स आसी था यही प्रकार गोटे डिलेमा आसे केतबे पॉजिटिव असर्सन आसे केतबे नेगेटिव असर्सन आसे ताकू स्टैंड स्टिल करने कौन कह जाए बट मदर फ्लाशिंग हर टेम्पर लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर छोट बेले जमी छोट छोट पिला मानक कही था किए ग्रांड चिल्ड्रेन्स निकर्स निकर इन दी सेंट आम कह जोटा यूज करूँ आमर कौन कहला पैंट्स मुझे कहली एक्चुअली यूजिंग सर्टन इलास्टिसिटी बेले बेले पिला पिंधे दिया जाए बेले बेले खोली दिया जाए जमी से सेन्स कौन कर वेट as the pulled back on her head would not less at cut down a flower tree most of the time माँ कौन करती जिते राग मूर्ख आसवे cut down this flower tree try to understand the point the poet is focusing on environment that means on by against deforestation and for afforestation माँ जिते चिड़चिड़ा जाती कहते पोएट को ये चंपा ट्री काटिदेव चंपा ट्री के आरथर को आसिले चंपा ट्री काटिदेव यहाँ रही द्वारा मुझे बहुत इरिटेटिंग होती कि पुणी बेले बेले कौन होते माइंड रे गोटे प्रकार कूलनेस आसे दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी जो एंगर मोड को जाती जो टेम्पर मोड को जाती पुणी नॉर्मल स्टेज को आसी जाती वेट एज द कोल्ड पैक ऑन हर हेल्थ जो टेम्पर था बहुत से आग्रेसिव मोड रे था पुणी माइंड टी कूल हो जाए would not less us cut down a flowering tree माँ पुणी कहते ना 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 गछटा को तुम काटबनी कहीं काटबनी यहाँ गोटे फ्लावरिंग ट्री ये गोटे लिविंग एक्चुअली क्रिएचर भरी कम दौर ये फ्लावरिंग ट्री आम किसी बेनिफिट पाई पाचे कौन बेनिफिट पाचे ना ऑलमोस्ट आज ओल्ड आज हर मत जी वर्ष हमारी ये गछटा हूँ से वर्षर ताको काटनी जिते सेंटेड हुए से इरिटेटिंग होती कौन ना गछटा काटिदबा गछटा काटिकी फोपाड़ी दबा आ मत फ्लावर फ्राग्रांस आसबनी मुझे इरिटेटिंग डिस्गस्टिंग हेबिनी पुणी बेले बेले कहते ऑलमोस्ट आज ओल्ड आज हर एज रे फ्लावरिंग ट्री सी डेड गछर भी मंजी होची सी सेड बाय ए पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंटियल ड्रॉपिंग्स ट्री अच्छी बोली प्रोविडेंटियल मीन्स लकीली लक भाग्य फेट प्रोविडेंशियल गछटी अच्छी बोली ये बहुत पक्षी मैंने आसी भाग्यर सहित आश्रय नौकरी गछ न रही पक्षी मैंने पुणी कौटी बसवे किए कहती माँ कहती निज को निज सोलाक्सिंग वे आउ टेम्पर न था से हिट माइंडेड न था ऑलमोस्ट आज ओल्ड आज हर सीडेड सी सेट्स बाय ए पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग्स ड्रॉपिंग इन द सेंस कौन टू गेट सेटलमेंट बा सेटल्ड ये भी देती प्रोविडेंशियल मीन्स लकी आउ ड्रॉपिंग माने लिखिदेव ड्रॉपिंग में डाकिदेवी मीनिंग ड्रॉपिंग होमर कौन कि एक्चुअली सेटलमेंट फॉर सेटल आश्रय नेवा टू गिव हर गॉड्स and her daughters and daughters basketfuls of annual flower. Since this tree is living, it provides flowers. झील मैंने आसुच्च पुओ मैंने आसुच्च झील मैंने भी ये आसुच्च ग्रांड चिल्ड्रेन्स आर कमिंग हियर गोटे एंटरटेनमेंट आसुच्ची दे आर प्लकिंग बास्केटफुल्स ऑफ चंपा फ्लावर्स चंपा फूल गोटे गोटे माने बास्केट माने कौन कि आम जोटा यूज कर कौन कहला बास्केट माने कौन झुड़ी झुड़ी तो आम जोटा फूल जो कलेक्शन करूँ कौन अच्छे बास्केट से बास्केट रे कौन करी आसी भरपूर करके नौचंदी कौन फ्लावर्स ऑफ एनुअल वर्ष वर्ष धरी दे आर टेकिंग फ्लावर फ्रॉम दिस ट्री इफ इट वुड बी कट डाउन हाउ दे कैन एक्चुअली इमीडिएट दे हाउ कैन दे कैन एक्चुअली फुलफिल द conditions or requirements relating to worshiping जो फ्लावर टा नौचंदी इन द सेंस फॉर वर्शिपिंग गॉड और गॉडेसेस यदि फ्लावर न रहिबा it will create certain type of complexity for the people all around and for one line of a cousins a dower of migrants in season
जदि आम कहवा ये रेनी सीजन टा खराब नुहे, इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। ये जो चंपक फ्लावर खराब नुहे, इट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। ये डावर, डावर इन द सेंस गिफ्ट ऑफ। मिग्रेन्स, मिग्रेन्स इन सीजन, प्रत्येक सीजन रे किछि भल गुण आसीबो, किछि मंद गुण आसीबो। वर्षा सीजन गला परे एते आउ फ्लावर आसीबनी, एते केबे लाडेन हबनी गछ। जेतबे अधिका फूल न फुटिबो, ये गछ को अधिका लोक के नबा पे आसीबनी। तमे जानिथिबो जो टगर फूल कथा कहली, टगरटा कौन बेसी कौ सीजन रे फुटिबो, ए वर्षा दिन नुहे। तमे देखिबो जो खुदुरुकुणी ओषा सब करूथिबो, धला टगर गुड़ा मैक्सिमम फुटे। तेणु इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ सीजनल एक्चुअली रिकंडीशन by which we are getting ourselves to fulfill the demand of the environment. आर नेक्स्ट क्लास रे आमे क्वेश्चन आंसर मु करनी आसीबी। आ गोटे काम करिबा, आमे आर समरी मध्य डिक्टेट करई देबी विथ वर्ड मीनिंग। ग्लोसरी रे किछि वर्ड मीनिंग अछि, देखि देबा। इकोलॉजी, द वे इन व्हिच प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट। सेकंड, रेज, रेज इन द सेंस अनकंट्रोल्ड एंगर, माँ प्रबल रागी जाउथिले सेतले, अनकंट्रोल्ड एंगर। देन माइग्रेन, माइग्रेन इन द सेंस सिवियर हेडेक, जो मुंड बिंधा हम, किबा आमे कहू ना मो मुंड कोन होची, मुंड बुलाउची, ए गुडा माइग्रेन। देन पोलन, पोलन मीन्स फाइन पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स, फ्लावर जो पाउडर टा प्रोड्यूस। देन शिफ्ट, शिफ्ट इन द हियर, शिफ्ट इन द सेंस सेपरेट, सेपरेट इन द सेंस ए गछटा को जेमदाले हानि काटी के बगाडे रे, shift in the sense separate. Then porous, porous means having tiny holes, टिकी टिकी जो होल ताको हम porous कहले। Then scales, small fat pieces of skin, as in fish and snakes, snake हुंतु बा fish हुंतु से जो scale से बाबद रे कहै जाय छै। Then bone cracks, bone cracks in the sense देखिबो sounds made at the bone joints when you move, जेतबे तमे केही कोन करबो दूर पाखरे जीवा आसबा करूछो, गोटे प्रकार साउंड हुए नि कि सेमती। देन ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स बेंट इन मेनी डायरेक्शंस, मेनी डायरेक्शन। फूलटा जेतबे गछरे फुटी जाए, फलटा जेतबे गछरे हे जिवो, गछटा लाडेन माने नही पड़े। आ जेतबे गछरे फल नथिबो कि पत्र नथिबो कि फूल नथिबो, से ठुंटा हेकरी वैकेंटेड मोड रे रहिबो, चिड़ा हेकरी रहिबो। प्रोविडेंशियल इन द सेंस लकी, लकी इन द सेंस फेथफुल। आ गोटे रहउची डावर, डावर रहउची गिफ्ट। आदरे मैक्सिमम वर्ड गुडा देई देइछि, आ कोन वर्ड देबी तुम, केवल मु भाबुची समरी टा देई देबी, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दबा, तापर पर एक्सरसाइज गुडा मु करी आनी देबी। नोट्स करी देइछि किंतु कॉपी आनी नि, कॉपीटा ने मु भाबिले सेकंड ईयर पिलांकर एटा अपिले देखिबा। आमे 10 टा क्वेश्चन लेखा। It is relating to preposition. There is a bridge, there is a bridge, dash the river. My friends are running dash the road. Our teachers distributed chocolates. Our teachers distributed chocolates. Dash the students. Dash I come in, sir. Dash I come in, sir.
This child may be a good modal study. Yes, I come in a modal preposition. Okay. This this child may be yes 7 years. What is the time? Dash or watch? Next question. What is the time? Dash your watch. I saw my friend dash the morning. What are you aiming dash? What are you aiming dash? He reached home. He reached home. Dash evening. He reached the station. He reached the station. Dash 10:30 a.m. You must use prepositions. You are staying in this hostel. Your native is from your native place. Paradip. Paradip. Both are of Paradip. Your name is Gita. Your name is Vidya. Paradip. Very nice place for picnic. You are from Madhuban. Madhuban. You are from Vidya. Revansa Road. Revansa. Revansa. You are reading in school. Which school? Convent. You are from CBSE. ICC. What an ICC school. What is your percentage in math? You, you must be good in English. Very nice. Saraswati, what is your favorite subject so far as schooling is concerned? In which subject you secured much more marks? Social skills. In case of mathematics, so, most of the time it happens in case of cities. Exactly. What's your father? Is it? How many?
capital in the town? No? ଏଇଟା ହବ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ appropriate ହେଲା this child may be about 7 years near about. What is the time by your words? By your actual sense, I am asking a time and you must have to prejudge it from your own words. That is by words. It may be before morning. He reached home in the evening. He reached the station. It would be fine. And, read yourself. If not available any grammar book with you, I will provide certain grammar books and I will have to explain it to you. What are you aiming at? At. It is or above. देखो what is the time by your words? By your words. What is the time by your words? What is the aim of your life? Most of the time the teachers ask what is the aim of your life. You can say to be a doctor, to be an engineer, to be a teacher, so on and so forth. But when you ask what are you aiming at? Aiming at means particular job sector ପାଇଁ aim, profession ପାଇଁ aim. ତାପରେ what are you searching for? ସେଠି aim at. But aiming to means objective. Aim to means objective. What are you aiming at means what is the aim of your life? Aim to in the sense target. Targets. You have taken certain notes or not related to political science or sociology? Others.
try to take the copy of political science notes. I will provide you. One. If you are preparing yourself, then try to rectify it. It would be better. Or I will supplement some certain points there. Tomorrow will be the class of political science for us. Sunday you try to attend the class. Along the road, the teachers came home. May I come in? About 7 years. May in the sense I am not sure. About what is the time? Buy your watch. Buy your watch. I saw my friend dash money in the morning. What are you aiming at? He reached home in the morning or in the evening or before evening. About. He reached the station at what is the time? 5 minutes to go. Okay, students. Write 5 lines. The aim of your life. The aim of your life. Write at least 5 lines. At least. You have put the books of political science. Political science. Then another. Two books are there. Related to sociology. Vidya. Completed. Yesterday you were attending Teachers' Day or not? You were present here in the celebration. You were present. You, you were, yesterday you were present or not in the celebration. I haven't seen you. ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଦେଖିପାରିଲିନି ତମେ କଣ ଏଠି ନଥିଲ କି? ଏ ରୁମରେ ଥିଲ? ଏଇଠି ଥିଲ? ମୁଁ କାହିଁ ତମକୁ ଦେଖିନି।
তুমি এটি না এই রুম রে मैक्सिमम हॉस्टल स्टूडेंट है। हेलो कौन सी लैब है? हेलो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା देखिए हमर जो प्रीपोजिशन होनी ना ये जो फ्रेज प्रीपोजिशन तुम यूज करछ दुई दुईटा ना मते केते होते कि ग्रामर तुम प्रीपोजिशन तुमको पड़े है भल है ये जो गुड़ा आई वांट टू फर है एठी तापर आई टू बी रियली ये भर गुड़ा है ना कहि देबी लेक्चर विद्या सेंटेंस कंप्लीट होला परे गीता फुल स्टॉप रहइबो आईपीएस ऑफिसर
नेक्स्ट क्लास जो होगा गोटे लेखिक आनते सब रिलेटिंग टू टीचर्स डे गोटे होमवर्क टीचर्स डे ओके स्टूडेंट्स थैंक्स